अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। ये पैदा हुए थे 1856 में और इनकी डेथ हुई थी 1950 में। यंगेस्ट चाइल्ड थे सिविल सर्वेंट जॉर्ज कर शॉ और लुसेंडा एलिज़ाबेथ शॉ के। डबलिन में पैदा हुए थे। सैटरडे और प्रोटैगनिस्ट पेरेंट्स थे इसके। आयरिश ड्रामेटिक और लिटरेरी क्रिटिक भी रहे हैं। कंसिडर किए जाते हैं फर्स्ट मॉडर्न ड्रामाटिस्ट टू हैव बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर 1925 एंड ऑस्कर 1938 फॉर हिज वर्क ऑन द फिल्म ऑफ पिग्मेलियन। Become educated socialist and early member of Fabian Society and wrote many speeches for it. को-फाउंडर माने जाते हैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस के 1895 में। 60 प्लेज लिखे विद सोशल प्रॉब्लम। क्लार्क भी काम किया, कैशियर भी काम किया। डबलिन क्रिटिक बने आर्ट के। व्हेन स्पॉन्सर्ड बाय विलियम आर्चर ही ज्वाइंड द रिव्यूइंग स्टाफ ऑफ पॉल माल गैजेट इन 1885, जहाँ पर इन्होंने सूडनेम कॉर्नोडी बेसेट हॉर्न के सूडनेम से लिखा बिकॉज इट साउंडेड यूरोपियन। नोबडी न्यू व्हाट कॉर्नोडी बेसिटो वाज। द डार्क लेडी ऑफ द सोनेट, ये इसकी शॉर्ट कॉमेडी है शाह की। अपने आप को लीडिंग थिएटर और म्यूज़िक राइटर इन्होंने साबित करवाया सैटरडे रिव्यू के ज़रिए, ड्रामेटिक रिव्यू, आवर कॉर्नल, पॉल माल गैजेट, द वर्ल्ड और द स्टार के ज़रिए। म्यूज़िक क्रिटिक भी रहे हैं ये। इनकी वाइफ है शार्लेट पाइन टाउनशेड, आयरिश पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी। 1898 से 1943 तक ये ज़िंदा रहीं। इन्होंने लिटरेरी कैरियर नावल से शुरू किया, लेकिन जिनके जो 5 नावल थे वो अनसक्सेसफुल थे। 5 नावल थे इनके। इमेच्योरिटी 1879, Cazel Byron Profession 1882, An Unofficial and Unsocial Socialist, The Irrational Not Love Among the Artists। 25 साल की उम्र में वेजिटेरियन बने। जॉर्ज जॉन वेंडलियर ली शॉ called him second father and musical father। किडनी फेलियर से 2 नवंबर 1950 को ये मरे। विडोवर हाउस 1892 में। द फिलेंडरर एंड मिसेस वायरन प्रोफेशन, ये इनके अनप्लेजेंट प्लेज हैं। द मैन ऑफ डेस्टिनी आर्म्स एंड द मैन कैंडिडा एंड यू नेवर कैन टेल, ये इनके प्लेजेंट प्लेज हैं। शॉर्ट स्टोरीज़ का जिक्र करें, द ब्लैक गर्ल इन सर्च ऑफ गॉड 1932, द मिरेकुलस रिवेंज, ये इनकी शॉर्ट स्टोरीज़ है। ड्रामास का जिक्र करें, प्लेज अनप्लेजेंट, published in 1893. This is the early play that has been characterized as unpleasant because of the dramatic power is used to force the spectator to face unpleasant facts. Widower House 1892, ये 3 एक्ट्स में है और ये प्रीमियर हुआ 3 अगस्त 1892 को रॉयल्टी थिएटर, और इसके प्रोटैगनिस्ट है हैरी टेंच। द फिलेंडरर 1893, ये स्टायर है शाह रोड, इसकी 2 एंडिंग्स लिखी। मिसेस वॉरेन प्रोफेशन 1893, ये प्रॉब्लम प्ले है और टाइटल रेफर करता है प्रोस्टिट्यूशन की तरफ। द प्ले बेसिकली सेंटर ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन मिसेस वॉरेन, द brothel owner, and her daughter Vivi, who finally comes to know that her mother is running a chain of brothel. Initially she is horrified, but then she considers her mother as a champion. Vivian takes a job vowing never to marry and disown her mother. प्ले प्लेजेंट 1898, ये लिखे गए हैं लोगों को खुश करने के लिए। पिग्मेलियन, ये एक रोमांटिक कॉमेडी है। पिग्मेलियन एक प्ले भी है, ग्रीक मिथोलॉजिकल कैरेक्टर है। ये 5 एक्ट्स है। टाइटल जो है ओविड मेटामॉर्फोसिस से लिया गया है। प्रोफेसर ऑफ फोनेटिक्स हेनरी हिगन मेक्स अ बेट दैट ही कैन ट्रेन अ बेडरेल कॉकनी फ्लावर गर्ल एलिजा डोलिटल टू pass for duchies at an ambassador garden party by teaching her to assume a venery of gentility, the most important element which he believes is an impeachable speech. Colin Pickering is a person with whom Professor Higgins bet the very next morning Eliza appears in Higgins' laboratory for learning lessons so that she can speak properly in a flower shop. Colonel Pickering agrees to pay the cost of experiment of Higgins on Eliza. Higgins trains Eliza for a number of months and the 2 trials are taken to judge the progress, one at Higgins' mother home and second at ambassador party, which have been a great success. Higgins and Pickering are bored now with the experiment that caused Eliza to be hurt. Eliza throws Higgins' sleeper at him. Enraged, she returns him with hired jewelry and Higgins accuses her.
Eliza runs away from Higgins' home. Hi, Mrs. Higgin hide Eliza in the upstairs. Eliza was thankful of Pickering for always treating her like a lady and threatens Higgins that she will never work with the rival Ponetian Nemo Kick. Eliza leaves for her father's wedding. It never became clear that she passed as a Duchess or not. Important quotation है इसकी. I don't want to talk grammar, I want to talk like a lady. Walk, not bloody likely I'm going in taxi. आर्म्स एंड मैन ये कॉमेडी है. शॉ की फर्स्ट कमर्शियल सक्सेस. टाइटल जो है विर्जिल एनीड से लैटिन से लिया गया है. Arma Virem Canu Arms and Man I Sing. The Man play takes place during the 1885 Serbo-Bulgarian War. Its hero Raina Petkov is a young Bulgarian woman who is engaged to Sergei Strenko, one of the heroes of the war whom she idolizes. The play is part of Shaw Plays Pleasant volume, which also includes his other popular like Candida, You Can Never Tell, The Man of Destiny, One Night, Swiss Mercenary Soldier in Serbia Army. Captain Bliss climbs in through her bedroom window and threatens to shoot Raina if she gives alarm. The war ends with Bulgarian and Serbian signing a treaty and Sergei returning to Raina, but Luka tells Sergei that Raina is protected by Blanche and thus Sergei proposes marriage to Luka. Raina tells Blanche she left a photograph of herself in coat's pocket inscribed to my chocolate cream soldier. It was written on Mr. Petskov. As Luka convinces Sergei that Raina totally loves Blanche, Sergei challenges Blanche to avoid fighting. Sergei and Raina broke their engagement. Major Paul Petkov, Raina's father, discovered the portrait in the pocket of house coat, but Raina and Blanche remove it before he finds it again. Blanche married Raina Petkov. You can always tell a soldier by the inside of holster and cartridge boxes. The young one carry pistol and cartridge, the old ones grab. Candida. इस नावल को अगर हम प्ले को ये कॉमेडी है GB शाह की. द प्ले सेट इन नॉर्थ ईस्ट सबर्ब लंदन in the month of October. It tells the story Candida, the wife of famous clergyman James, moral Christian socialist, but Candida is responsible for his success. Candida returns to London with Eugene Marchmont, who loves Candida and considers her divine, but ultimately Candida selects her husband. Famous auction scene of Candida appear at the end. Man of Destiny, it is set in Italy during the early career of Napoleon. You never can tell. It is a 4-act play set in August 1898 at the place of English seaside resort. It tells the story of Mrs. Chandon and her 3 children, Dolly, Philip and Gloria. Play continues with a comedy of error and confused identity with a friendly and wise waiter Walter dispensing his own wisdom with the title phrase you never can tell. 3 plays for Puritans. 1901 Devil Disciple, the melodrama 3 at the setting in the fall of 1977 during the Saratoga campaign. The play tells the story of Richard Daguion, a local outlaw, self-proclaimed David disciple, the quote, martyrdom, the only way in which a man can become famous without ability. Caesar and Cleopatra, 1898. It is a 5-act play. The play has a prologue and an alternative to prologue. Captain Brasspoint Conversion, 1899. It is a 3-act play which is a melodrama and problem play. An aggrieved captain is persuaded to forego revenge. नेक्स्ट है मैन एंड सुपरमैन. इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, इन वाइटफील्ड, a young woman somewhat enigmatic, she corresponds to character Donna Anna in the non-John myth. Don Tanner, also called John Tanner, he is well-educated, well-spoken man, takes everything seriously, including himself, political firebrand, confirmed bachelor. He is a descendant of Don John Octavius Robinson, amiable young man who is in love with Anne Whitfield and brother of Violet Robinson. He represents Don Octavio from the Don John myth. Robeck Ramstein, an aging civil reformer friend of Mr. Whitfield, he responds to the statue in a Don John myth. Mendoza, an artist who collaborates with Tanner. She is the president of the League of Sierra. Back to Methuselah. It consists of preface and a series of 5 plays. The 5 plays are
In the beginning, the gospel of Brother Barnabas, the thing happens, tragedy of elderly gentlemen as far as thought can reach. Silence is the most perfect expression of scorn. सेंट जॉन 1923, अगर इसके बारे में हम जिक्र करें, ये लास्ट प्ले है शॉ का. ओनली ट्रेजेडी बाय शॉ एंड माइकल हॉलिंग हैज़ कैरेक्टराइज्ड दिस प्ले. ट्रेजेडी विदाउट विलन प्ले इज बेस्ड ऑन द लाइफ ट्रायल ऑफ जॉन ऑफ आर्क. Shaw himself characterized St. John, a chronicle play in 6 scenes. An epilogue period is early 15th century Belfast, Weigel Kingdom, moving allegiance to English King Henry VI. John, a French peasant, James, a divine. We heard voices Saint Catherine, Saint Margaret, Angel Michael commanding her to dress and don armor as a soldier and drive to English court, English out of France. She accused of harsh heresy, protest against interference by church in a matter of personal faith. She was burnt. And in 1431, the idea play was suggested when in 1920 Roman Church canonized John of Arc as Saint John. Other plays Apple Card 1929, True to Be Good 1931, On Rocks, Heartbreak House, and The Dark Lady of the Sonnets.